Okay, let us start the lecture. तो लास्ट टाइम मैंने एक्सरसाइज रखी थी आर शार्प इक्वल टू आर सी ई, तो होप वो आपने की होगी. टुडे we'll do the following theorem which will give us the characterization for the pair to be in R sharp. So that's this proposition. You can write it as a theorem. Let S be a semigroup let S be a semigroup and R be a relation on S. Then the pair XY is in R sharp if and only if for some n greater or equal to 1, for some n greater or equal to 1, there is a sequence, there is a sequence starting from X equals S1 A1, and we have a transition S1 B1 which is equal to S2 B2 S2 E2 S2 E2. Then it's S2 A2 should be S2 E2, yeah, it's S2 E2. S2 A2, then S2 B2, then final the last transition is SN BN SN AN, okay, to SN BN, and SN BN is equal to Y. in which in transitions का मतलब क्या है, in which these pairs, in which each pair AI BI is in R inverse, belongs to R converse of R converse. So this is the statement of theorem. First we assume that the pair XY is in R sharp, and we'll try to construct this sequence of transitions from X to Y. Proof. So suppose the pair X comma Y belongs to R sharp. Okay. Since this R sharp, this you have seen, it's equal to RCE. What's RCE? It's equal to RC union RC inverse union identity relation on S power infinity. Okay. Yes. So therefore the pair XY, it is in RC union RC inverse union the identity relation on X S power infinity.
So let's denote this relation by T. Let T be equals to RC union RC inverse RC inverse union identity relation on S. Okay, so then the pair xy, it is in T infinity. What's this T infinity? It's actually the union of T power n, composition of T n times n runs from 1 to infinity. So first we see that this RC inverse is equal to R inverse C actually. R C inverse, and then this will be R union R inverse C. Okay. So since xy is in T power n for some n, so it means that we can find n elements x to z1. Z1 to z1 dash is equal to z2 dash. These are in RC inverse. Okay, so then this so therefore this pair xy, it is in T power n for some n greater or equal to 1. For some n greater or equal to 1. आप लोग अपना वीडियो ऑन करिए जरा. For some n greater or equal to 1. So thus we can find n elements, or rather n minus 1, I think. If it is t square, suppose, then we can find so how do I write it? So zi dash, then so if it is in T power n, so by composition I can find n elements. Okay, that's fine, but it should be of this form. So let's take then there exist say z1 dash, z2 dash, zn dash in S, because it's a relation on S, such that it starts with x, which is equal to z1 to z1 dash, and z1 dash is equal to say z2 to z2 dash equal to zn to zn dash, that's equal to or I will write it like this, such that I can write it is such that zi dash, it belongs to T, okay, for all I equal to 1 to n,
and that's this Z1 is the first element, this is X, and Z dash is the last element. Take this as Y. So this is the definition of composition actually. Now this pair, it is in T, and T is RC, union RC inverse, union. So RC और RC inverse की definition क्या है? तो RC की definition आपको apply करनी है actually. Since this T, it's equal to RC union RC inverse, union identity on S. So there exists, therefore there exists SI in S, okay, SI in S. It's a relation on S or X? It's a relation on X. Sorry, आप जो मैं statement लिखा ना, it's for action actually. This relation is on X. आप जो statement है ना, वहाँ पर आप relation लिखिए on X पर ही relation है, where X is a left-hand system. Okay, that are the relation on a left-hand system X, on a left S system X. Okay, on a left S system X. So these elements, they are in X, not in, they are in X. Okay, they are in X. Okay, so this identity relation, it is the identity relation on X, not on S, because the relation is on X. Okay, so relation X पर है, not on S. So there exists SI in S, and there exist two elements AI, BI in S, in X. Okay, these elements are in X. Such that this ZI, it's equal to SI AI. ये तो relation की definition है ना, RC की relation क्या है? ZI dash is equal to SI BI with this condition: AI BI belongs to or its converse. Okay. So हमने एक्चुअली एक चीज़ और यूज़ की, हमने इसमें RC इनवर्स इज इक्वल टू RC. So we should note that point. आप यहाँ पर वो ब्रैकेट में लिख दीजिए. Note that RC inverse is equal to R inverse C. इसको आप चेक भी कीजिए, ये असाइनमेंट है आपके लिए, जहाँ पर हमने सेमी ग्रुप्स पर ही रिलेशन डिफाइन की थी ना, वहाँ पर हमने इसको चेक किया था सेमी ग्रुप्स के लिए. अब आपको यही एक्शन के लिए प्रूव, यहाँ वहाँ पर RC डिफरेंट था, यहाँ पर RC डिफरेंट है. तो आपको मिला ये ZI जो है ना. सो therefore we have this X which is equal to Z1. Z1 is equal to S1 A1. There is a transition to S1 B1, okay, which is equal to S2 A2, which is equal to S2 A2, transition S2 B2, and so on. It's equal to, then we have Zn, that's equal to Sn An, transition Sn Bn, which is equal to Y. So as required. Okay.
Now conversely assume that assume that there is a sequence, there is a sequence starting with x, s1a1 to s1b1 equal to s2a2 to s2b2 equal to snan transition snbn, that's equal to y. Okay, suppose this where each pair ai bi belongs to r inverse, where each pair belongs to r inverse. Okay. Each pair is an r inverse. So this gives since a1 b1 it is in either r inverse, so this gives by definition of RC, okay, like by definition of RC, okay, this gives that, don't have here zeros, this gives by definition SI AI is, okay, this SI SIBI, it belongs to RC, or it belongs to R inverse C. Okay. Because the pair AIBI, if the pair AIBI is in R, then it is in RC, okay? And if the pair AIBI belongs to R inverse, then this pair will be in R inverse C. So it depends on the pair actually AIBI, where this pair lies. If it lies in R, then it's in RC. If it lies in R inverse, then it will be in R inverse C. This thing, it's equal to RC union, RC inverse. Okay, and it's obviously subset of RC union RC inverse union identity relation on S. Okay, that's equal to T. ये T में. But you know T is subset of T square, subset of T cube, so on and so forth. This is true for all I. For all I runs from 1 to n. But then सर this, आई ऐसे आएगा एक्स oh sorry, क्या कहाँ कह रहे? Okay, it's Ix, yes, you are right. It's Ix. Please आप इसको गौर से देखिए. It's Ix. It's the relation on X system. So this implies SIAI SIBI belongs to T, okay, belongs to T power n for all n greater or equal to 1, and for all I equals to 1 to up to n. यहाँ से भी आप डायरेक्ट कह सकते इट इज एन RCE, तो so this is in Tn, okay, but this Tn it's if it is in Tn, then it will be in the union, okay, then it will be in the union. This implies SI
AI Si Bi belongs to union Tn and runs from 1 to infinity. But that union is actually R sharp RC. So each pair S1 A1 S1 B1 ये भी R sharp में है, then S2 A2 S2 B2 वो भी now you can apply the transitive property. So so that means this means that X is S1 A1, okay, S1 A1 S1 B1 ये भी R sharp में है. इसके बाद जो नेक्स्ट पेयर है वो है S2 A2, बट व्हाट्स S2 A2? It's actually S1 B1. So S1 B1 is equal to S2 A2. This pair S2 B2, it's also in R sharp. And you can continue this process. So we have first here Sn minus 1 Bn minus 1, that's equal to Sn An. Then the second entry of this pair is Sn Bn, and this is equal to y, okay? This one, it is an R sharp. Now R sharp is a transitive relation, so we can apply the transitive property. This gives xy belongs to R sharp. Xy is in R sharp, okay. Now we have some examples of systems, left S system or right S system. Every monoid is an SS system. S जैसे आपके पास है ना, every field is a vector space over itself. So by say every monoid is a system over itself. By where the action is the multiplication of semigroup. और वहाँ पर भी जब आप कहते हो एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस, वहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? दैट्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फील्ड. सेम इज हियर. एवरी मोनाइड एस, एक्स की जगह पर ऐसे, इज एन एस एस बाई सिस्टम, इज एन एस एस बाई सिस्टम. is an SS by system. Okay, where अब यहाँ पर तो एक्शन आपको बताना क्या है ना, where the actions of S, जो एक्शन आप, क्योंकि दो एक्शन है लेफ्ट एंड राइट बाय सिस्टम, where the actions on S पर कौन से एक्शंस है, एक्शन क्या है, where the actions of S on S, okay, of S के actions, okay, where the actions of S on S, actions of X on S होता है ना, actions of S on X, okay, अब यहाँ पर on S होगा, are defined by means of the multiplication, are defined by means of the multiplication, जो वहाँ पर है given multiplication, semigroup का multiplication of S, okay. So that is for all X in S, okay, S in S. अब मैं ये X मतलब है कि मुझे यही प्रूव करना है, ये सिस्टम लेफ्ट S सिस्टम, तो दिस S is लेफ्ट S सिस्टम, तो दोनों सेम है. So what's this action? This action XS goes to XS. This is the usual multiplication, okay. This is the multiplication of S here, multiplication of S, okay. और इसी तरह से ये तो आपने राइट किया डिफाइन, अब लेफ्ट आप कर सकते हो, लेफ्ट भी ऐसे ही आप कीजिए डिफाइन, SX multiplication of S, because both the elements are in S. So then you can see this,
stx equal to stx. This is just actually the associative property ना, क्योंकि यहाँ पर multiplication सिर्फ s का है, and xst is equal to xst for all st x in s. That's for all x in s, s in s, the actions are, okay, the actions are definable, okay, or defined by this. अब बाई सिस्टम की और एक तो लेफ्ट होता है, राइट भी होता है, and there is one more property, and that property s xt it's equal to s xt. ये भी associative property for all st x in s. So it's a bisystem. It's every monad is an ss bisystem. और एक एग्जाम्पल है सब मोनाइड आपके पास है, us का सब मोनाइड आप लीजिए. इफ यू इज अ सब मोनाइड, इफ यू इज अ सब मोनाइड of a monad S, submonad of a monad S, then S is your x is here S, okay, then S is a UU bisystem, UU bisystem. मतलब आपका जो सेमी मोनाइड है वो यहाँ पर U है, ओके, और जो सिस्टम है वो आपको S प्रूव करना है, UU bisystem. Again the multiplication where the actions are the multiplications of S, where the actions are the multiplication of S. So they are multiplications of S, okay, you can easily verify this now. तो आपको S देखिए SU मतलब आपका SX, okay, SU goes to simple multiplication, okay, the usual multi जो है यहाँ पर आपके पास. इसी तरह से अगर आप SU का US का देखना चाहोगे, it goes to US. So it's very simple, you can verify all the properties of bisystem. अब हम आइडियल्स पर आ जाएंगे. यू एस एस बाई सिस्टम नहीं, ठीक है, यू इज नॉट एस एस बाई सिस्टम, एस इज एस यू यू बाई सिस्टम. मगर अगर यू आइडियल होगा उस केस में यू ही एस एस बाई सिस्टम होगा, यू एस एस बाई सिस्टम होगा अगर आइडियल होगा. दैट्स द नेक्स्ट एग्जांपल. अब क्योंकि वहां पर जो आउटपुट होगा ना, अगर आप एक एलिमेंट आइडियल से लो, दूसरा एलिमेंट एस से लो, जो प्रोडक्ट होगा वो आइडियल में होगा, क्योंकि आउटपुट आपका वो सिस्टम में होना चाहिए. एक्स तभी हम मैप कहेंगे एक्स क्रॉस एस टू एक्स, आउटपुट शुड बी इन एक्स. तो अगर आइडियल होगा तो आउटपुट ऑब्वियसली आइडियल में ही होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन ही आप एक्शन लो. बट सब मोनाइड के केस में ट्रू नहीं है. आप एक एलिमेंट सब मोनाइड से लो, दूसरा एलिमेंट मोनाइड से लो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट होगा ये सब मोनाइड में होगा. तो सब मोनाइड जो होगा दैट्स नॉट एन एस एस बाई सिस्टम, बट आइडियल इज ऑलवेज एन एस एस बाई. इफ आई इज एन आइडियल ऑफ एस, देन आई इज an SS bisystem. If I is a left ideal, अगर लेफ्ट होगा तो लेफ्ट सिस्टम, अगर राइट होगा तो लेफ्ट राइट. If I is a left ideal of S, if I is a left ideal of S, then I is left as system, or you can say this, I belongs to SENS. That is, I is a left S system, as a left S system. But again this action is multiplication, okay. So where the action is multiplication, where the action is
is the multiplication, is the multiplication of S. So here for any x in I, क्योंकि यही आपको प्रूव करना सिस्टम है, तो x एलिमेंट प्रूव है इसमें s in s, we define left action by left action, okay, s left side equal to sx, it is the multiple. दोनों एलिमेंट्स किस में है? दोनों एलिमेंट्स s में है, ओके, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ s, और ये जो s खुद जो एलिमेंट है, ये जो x है ये i में है, s में है, तो क्योंकि आइडियल है तो ये i में हो जाएगा, दिस इज i. बाकी प्रॉपर्टीज आप चेक कर से, बाकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ही आ जाएगा. एक ही प्रॉपर्टी आपको चेक करनी, और आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी वो तो ओबियसली है ही, बिकॉज यू आर इन एक्चुअली एस, सो वन वहाँ पर आइडेंटिटी है, तो 1x x के ही बराबर होगा. और इसमें कुछ एग्जांपल्स है 8.1.4 और 8.1.5, ये आप देख लीजिए. 8.1.4 example 8.1.4 example 8.1.4 and example 8.1.5. so they are assignments for you, okay? असाइनमेंट में आप इनको एक्सप्लेन कीजिए अच्छी तरह से, जैसे हमने वो 3 एग्जांपल्स की. सो वन मोर एग्जांपल, तो जहाँ से एक्चुअली सिस्टम आया है ना, so that's let's take this symbol. Let x be a non-empty set and s is tx. Now if we define the action by, then this x can be regarded as a right s system, not a left s system. ओके, राइट एस सिस्टम हम इसको बना सकते हैं. एक्स को हम राइट एस सिस्टम, एस एस टी एक्स, देन एक्स इज ए राइट एस सिस्टम where the action is defined by. अब यहाँ पर एक्शन क्या होगा? where the action is, आउटपुट यहाँ पर x में होना चाहिए, ठीक है. where the action is defined by, क्या होगा एक्शन? अगर मैं x लूँगा, राइट करना मुझे प्रूव, तो ओबियसली राइट अल्फा यहाँ से आ जाएगा, ये x का एलिमेंट है, x यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा अल्फा जो tx में है, ओके. तो अब ये आउटपुट किस में होना चाहिए? x अल्फा को जब आप आपस में एक्शन जब आप अप्लाई करोगी, तो आउटपुट ऐसा होना चाहिए, मतलब आपको ऐसे डिफाइन करना है ये, सो दैट दिस आउटपुट विल बी इन x. तो हाउ डू यू डिफाइन दिस? कोई आइडिया आपको है कि कैसे इसको डिफाइन करें? यस, हाँ, वीडियो सब लोग ऑन करें. कितनी बार मैं रिपीट करूँ ये? यस, देखिए x का एलिमेंट है, अल्फा tx का एलिमेंट है. यस, यस, हेलो, हेलो,
हेलो, यस कोई बताए यहाँ डिफाइन कैसे करें हम एक्शन को? So let's define it by this image of x under alpha, क्योंकि ये x का ही member होगा. Alpha is a map from x to x. So by defining this action, you can easily verify all the properties of action. So let's take two elements of semigroup. Let alpha beta is in S and x is in X. Then we have this x alpha beta. Okay, this is equal to, this is the definition of composites, x alpha beta.